Hello, friends. How are you doing today? So, guys, whenever we appear for an interview, काफ़ी बार ऐसा होता है कि we've been asked lots and lots of questions, right? And then, basis on our knowledge and basis on the situation, we try to give certain answers to those questions. You know, कुछ भी करके हम कोई questions का आंसर करते हैं. For example, very common questions are being asked that where do you see yourself after 5 years, or maybe how do you see yourself, working for a pressurized situation, or do you work as a team member? There are a lot of questions are being asked, and at certain time, because of the lack of proper articulation and listening skills, we tend to give wrong answer, or we try to give the correct answer, but our impression of giving that answer does not land properly, or it does not sound a realistic or a proper answer. So in today's video, we are going to discuss about the importance of articulation and listening skills at an interview. So if you're interested in this topic and would like to know what all these things are, then I would request you to please watch this video till end to get the best out of it. So let's start it. Welcome to Mindyology, the platform for skills, lifestyle and career development. I'm your host and host Deepak from the Team-Mindyology. So guys, let's start the video. जैसा कि हमने बात की है आर्टिकुलेशन और लिसनिंग स्किल्स के बारे में, सो लेट्स स्टार्ट. एंड it is very very important in our normal life and in usual life also, but today's topic is purely based upon the interview. When we go for an interview, then what sort of problems and things we face because of this particular thing. So ये topic उसी के बारे में है और ये वीडियो भी उसी के बारे में है. Okay, so when we go for the interview, usually काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं हमसे कि आप अपने बारे में बताइए, आप उस ऑर्गेनाइजेशन में थे तो आपने वहाँ पर ये चीज़ क्यों नहीं की या क्या नहीं किया. सो व्हेन इट कम्स टू द आर्टिकुलेशन मीन्स हाउ आर यू presenting and delivering a particular answer. And when we talk about a correct articulation, it means कि सीधे सवाल का सीधा जवाब. If I have to put it in the layman language, एक साधारण भाषा में अगर हम इसको समझें तो इट इज़ कि सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए. जैसे बहुत बार आपने अपनी नॉर्मल लाइफ में, रूटीन लाइफ में भी देखा होगा, आपने किसी से सवाल किया है कि आपने ये काम कर लिया है या नहीं. Then you get the answer, you get a answer something which is not related to the question. You get all the answers which are going round and round and round. अगर फिर से इस चीज़ को साधारण भाषा में रखें तो घुमा फिरा कर जो जवाब दिया जाता है. मे बी यू आस्क दिस थिंग कि कल आप किस समय घर पहुँचे हैं. देन यू गेट द आंसर्स कि मैं कल निकला था, एंड देन मैं अपने एक फ्रेंड से मिला था, मैं किसी मार्केट में चला गया था, मैं फिर मेट्रो में गया था. And after all those circles and circles and circles, then you get the answer that okay, after that I reached home at 11 p.m. Instead of straight away saying that I reached home at 11 p.m., you get to hear the answer, or you're giving the answer in 3, 4, 5 lines. That is what a incorrect articulation is. And articulation or listening thing is, these are like, they go hand in hand. Those are all, these two things are interrelated. अगर आप सही से सुन नहीं रहे हैं तो आप उसको सही से आर्टिकुलेट नहीं कर सकते. अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं है उस सवाल पर तो आप उसको सही से प्रेजेंट नहीं करेंगे. तो both these things are interrelated and we need to take care of these things. Another example, let's discuss this thing, and this happens, and since we are talking about the interview, this happens that you've been asked this question that tell us about your strengths and weaknesses and all. I know it's a very technical question, it's a very tricky question. Usually people try to give the diplomatic answer, which is to certain extent is fine, because आपकी जो भी weaknesses हैं, especially जो weaknesses हैं, those should not sound like a very fatal one, that yes it could be a disastrous, कि जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो ये ना सोचे कि यार इनकी वीकनेस ऐसी है कि ये काम कैसे करेंगे. They can do a disaster, or they can be a
problem to the company. So you need to put the things in such a way that you are presenting those things, क्योंकि अपनी weaknesses या अपनी चीज़ों को accept करना एक बहुत बड़ी बात है. वहाँ पर आपकी honesty भी show होती है कि yes, you being honest, you being truthful to that question, that yes, you are accepting your things, but at the same time you put things in such a way that it should not sound disastrous as well. वहीं पर कई बार ऐसा होता है कि उस चीज़ को डिप्लोमेटिक आंसर देने के चक्कर में हम उसको इतना घुमा देते हैं उस सवाल को कि वो सवाल जो पूछा गया था वो कुछ और ही होता है. कई बार बहुत से लोग अपनी स्टोरीज कहानियाँ लेकर आ जाते हैं कि yes, I used to work there and then I used to do this and that and all. Understand this thing. If somebody is asking a very short question, we need to understand what kind of a question is that. Sometimes you have close-ended questions, sometimes you have open-ended questions. When you have open-ended questions, which means that it can have an elaborated answer, right? But a close-ended question, just a one-word or a one-liner answer, कि क्या आपने ये काम किया था? It's yes or no. Then you cannot associate lot of you cannot associate lot of explanation and things into that. क्योंकि मैं उस बंदे से बात कर रहा था तो ये हो गया था, मैंने ये किया था तो ये हो गया था. नो, दीज आर नॉट रिक्वायर्ड. यही गलती बहुत बार इंटरव्यूज़ में होती है. सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं मिलता, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो इम्प्रेशन जाता है इंटरव्यू लेने वाले को, वो ये जाता है कि यार ये पर्सन सच नहीं बोल रहा है, ही इज़ लाइक फेकिंग अ लॉट. I know it's not truth that you're faking. You try to be honest, but आप जिस तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं वो चीज़ फिर फेक साउंड करती है. इसमें ये लगता है कि या तो ये सीधा सीधा जवाब दे नहीं रहे हैं, और या फिर ये कुछ झूठ बोल रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं. एंड दैट can be negative, and because of that people get a lot of rejections as well. एंड अगर स्पेशली आप किसी ऐसी जॉब में जहाँ आप एक फ्रंट एंड पर्सन हैं, या आप कस्टमर सर्विस में हैं, या आपका क्लाइंट इंटरेक्शन होता है, तब ये चीज़ और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है. देन द कंपनी ओनर और मे बी द पर्सन हु इज टेकिंग योर इंटरव्यू वुड थिंक कि यार ये यहीं पे ऐसा बोल रहे हैं तो कस्टमर को फिर कैसे जवाब देंगे. इसका मतलब हमारे क्लाइंट्स, हमारे कस्टमर है, वो भी इसी तरीके की घुमा फिरा के आंसर उनको मिलेंगे, सही सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं मिलेगा. then it can be a very critical thing, my friends. Then your entire impression goes down. And even if you have potential, even if you have a capability, then because of this silly thing that you're not giving this straight answer to the straight question, to the point, you're not listening properly, you tend to lose that opportunity. So please don't do that. Listen to the question properly, listen it carefully, take some time. You may take some time. It's not required कि मैंने question पूछा है, interview में question पूछा और आप immediately आपको जवाब देना है. You can take some time. If it's a question like about your strength and weaknesses, if it's a question about your overall situation handling thing, कि आप ऐसी pressurized situation या कोई situation है उसमें आप कैसे काम करेंगे, अपने केयर, इस तरीके के question जहाँ पर आपको थोड़ा सोचना पड़ सकता है, you can always buy time. That give me a minute, let me answer you that. Nobody would say कि नहीं आपको immediately answer देना है. It's always better to give an incorrect or a answer which is not related to the question, या घुमा फिरा अगर या राउंड वाला आंसर देने से अच्छा आप थोड़ा टाइम ले लें, फिर उसको आप उस तरीके से बताकर करें. एंड बेस्ट है या बेटर है कि आप थोड़ी सी इस चीज़ की प्रैक्टिस भी कर लें. डेफिनेटली यू नेवर नो कि कौन सा सवाल पूछा जा सकता है, बट जो कॉमन क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं उनकी आप एटलीस्ट एक बार बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, रोल प्ले कर सकते हैं, मे बी विद योर फ्रेंड, मे बी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, सो दैट इस तरीके के सवाल अगर आ जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. देन यू कैन गिव द करेक्ट आंसर. बट वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेट सवाल का स्ट्रेट जवाब दीजिए. थोड़ा बहुत आप बता सकते हैं उस चीज़ को कि हाँ ऐसा था, लेकिन ऐसा ना हो कि जो पर्सन सवाल पूछ रहे हैं वो ये सोचें कि यार जो सवाल पूछा था उस पर कब आओगे, क्यों इधर उधर घूम रहे हो आप. तो वो चीज़ आप ना करें, सीधे सवाल का सीधा जवाब. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड्स. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग, और आप भी इन चीज़ों को अपने स्किल्स में अप्लाई करेंगे. जब भी आप कोई दूसरा इंटरव्यू देंगे इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखेंगे कि सीधे सवाल का सीधा जवाब और प्रॉपर सुनकर ही जवाब दें. सो if you found this video useful and helpful, then please do share with your friends, family and colleagues, and especially for the people who are preparing for the interviews or who are planning to go for an interview very soon. That can be helpful to them.
And if you like the content of Mindyology, if you love us, then please do subscribe to our channel and do not forget to hit the bell icon so that you can get the latest update from us always on time, my friends. And last but not least, again, I would say, please do share your feedback, suggestions and comments into the comment box, or you can write us at infomindyology@gmail.com and let us know what you think and feel about Mindyology, and do advise us what sort of topics and things you want us to make the videos on. We would love to do that for you because it's your own channel. So it's time to take leave from all of you. We shall meet next week at the same channel, Mindyology. Till then, please keep loving Mindyology like you always do, and do take very good care of yourself, my friends. Have a wonderful and a blessed day ahead. Bye-bye.